वैसे तो अभी रजिस्टर आपने नहीं करी होगी, तो ये बुक जो है आपके पास मिल जाएगी स्टूडेंट्स, मतलब एज यू रजिस्टर you will get the books. See students, we have to start with the economics. See, the word economics is derived from the Greek word oikonomia students, which means household. मतलब इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ओकियोनोमिया से ड्राइव करा हुआ है एंड विच मीन्स हाउस होल्ड. सी ग्रीक वुमेन के पास क्या होती थी, लिमिटेड रिसोर्सेज होती थी, तो शी यूज टू मैनेज हर हाउस विथ दैट लिमिटेड रिसोर्स. इवन जो अपन कह सकते हैं इकोनॉमी है, इन दैट देर इज ऑल्सो वी कैन से लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दैट लीड टू द वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. Economics is mainly related to the use of scarce resources. मतलब we know that we have discussed in class 11th in economics that we are having the unlimited wants and limited resources, and that has to be put in alternative uses. Coming to the we can say first thing, the subject matter of economics is broadly divided into two branches, and that is microeconomics and macroeconomics. So these two words were coined by the Ragnar Frisch in the year 1933. He belonged to the also university. He was the first economics to divide the subject matter of economics into two branches, that is microeconomics and macroeconomics. These are the two branches. I can ask one more question. Who was the person who has divided the subject matter into two branches? So we have to write Ragnar Frisch. In the year 1933. And these we can say two branches, that is microeconomics and macroeconomics, we used to discuss in class 11 and 12 syllabus also students. See, the statistics is also part of the we can say macroeconomics, and Indian economy also belong to the we can say area of concern of the macroeconomics. These two branches, that is micro and macro, we have to discuss. See, the word micro is derived from the Greek word micros, which means small. And even the we can say the word macro is also derived from the Greek word macros, which means large. The term micro deals with individual. The word macro deals with the aggregate. That is, we can say large means aggregate students. Aggregate here means sum total. The term aggregate here means sum टोटल स्टूडेंट्स. माइक्रो जो है वो डील करता है इंडिविजुअल के साथ, जबकि मैक्रो सबको साथ लेके चलता है स्टूडेंट्स. सी इंडिविजुअल हियर कैन बी अ फर्म, अ हाउस होल्ड और एन इंडस्ट्री स्टूडेंट, while macro we are saying that aggregate can be aggregate demand, aggregate supply, national income, national output, general price level students. These are all we can say aggregate terms we have to discuss at the country level, we have to discuss at the economy level students. But the term micro we can say derived from the Greek word micros, which means small, therefore it deals with the individual. Individual can be a household, a particular household, a particular firm, a particular industry. So now the conclusion is here is that in microeconomics we can discuss about one individual firm or even one individual industry. See, the difference between firm and industry is that summing up the firms we reach to the particular industry, like cement industry. There are the many cement producing companies in India, like Birla Cement, Binani Cement, JK Cement and many more. So these we can say companies are known as the firms. We can discuss for the JK Cement, that's a we can say individual study, that's microeconomics. But there are also many industries in India students, like steel industry, cement industry, textile industry. If you are discussing for one particular industry, that will be termed as the area of concern of the microeconomics. See, I can ask one more question. Study of cotton textile industry is area of concern of microeconomics or macroeconomics?
See, one particular industry can be discussed in the, we can say, area of concern of microeconomics, while macro discuss about the, we can say, aggregates. Aggregates means here sum total. See, if you are discussing all the industries of India, that's area of concern of the, we can say, macroeconomics. If I study for the particular student in a class, it's area of concern of the microeconomics. If I take all the students of the class, it's a, we can say, macroeconomics. If I study for the particular class at the school level, it's microeconomics. But if I take all the classes, it will be considered as the, we can say, macroeconomics. If I discuss for the one particular school in Ajmer, it's, we can say, microeconomics. But if I take all the schools, then it will be considered as a macroeconomics. So this is the, we can say, meaning of the word micro and macro. See, the meaning is different and the definition is different. Microeconomics, it deals with the individuals, while the macro, it deals with the functioning of economy as a whole. It means the macro deals, we can say, whole economy. Micro deals with the, we can say, individuals, and macro deals with the, we can say, economy as a whole. These are the, we can say, definitions of micro and macro. See, micro and macro are words coined by the Ragnar Fritz. The subject matter of economics broadly divided into two branches, that is micro and macro. Now the third point is that variables, microeconomic variables are demand, supply, cost, revenue, etc. These are the, we can say, microeconomic variables. While macroeconomic variables are aggregate demand, aggregate supply, national income, national output, general price level. See, the simple price concept is microeconomic concern. But if I take general price level, it is the area of concern of economics. General price level means the prices which are prevailing at the country level. The prices which are prevailing at the country level, that's the general price level. If the general price level is increasing, it is inflation. And if it is general price level are decreasing, it is deflation. So general price level is an area of concern of the, we can say, macroeconomics. So these are the main, we can say, variables of the macroeconomics, that aggregate demand, aggregate supply, national income, national output, general price level. The next thing is that the center stage of study in microeconomics is about allocation of resources. See, we have discussed allocation of resources in class 11, that is mainly a part of the central problems. The allocation of resources is related to what to produce, how to produce, and for whom to produce. Any other central problem? See, in this CPT level, CA foundation level, we have to also discuss what provisions are to be made for the future generation. What provisions are to be made for the future generation? See, this mainly is related to the sustainable development. What provisions are to be made for the future generation? That means we have to also think for the future also, because the resources are limited and we want that future generations should have the same standard of living what we are having, or they should have the more. So what provisions are to be made for future generation? So these are the, we can say, allocation of resources. And the second is price determination. See, price determination can be termed as factor pricing or product pricing. Factor pricing and product pricing. These are the main two areas of concern.
Okay, so this is the, we can say, what to produce, allocation of resource we have discussed. We are having the central problems, we are having the limited resources, and we have to make a choice accordingly. The first central problem is what to produce. That means which goods and services are to be produced. We are having the limited resource. We are discussing the center stage of study. इसके अलावा भी अपन कई सारी चीजें और डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर है what to produce, second is how to produce, and third is for whom to produce, and the fourth one is what provisions are to be made for the future generation. This one we have to, that is we can say, put the resources for the future generation also. So these are the allocation of resources in our business economics syllabus, students. One more thing, price determination. Just recall class 11th, last chapter, students, price determination under perfect competition. Price is determined at the point where market demand is equal to market supply. So students, price determination is the main work of the microeconomics, whether to determine the product pricing or for the factor pricing. Product pricing means any goods price is determined where demand and supply are equal. Factors of production are land, labor, capital, and entrepreneur. We have to pay a reward to them in the form of rent, wages, interest, and profit. That is also determined by the, we can say, microeconomics according to demand and supply. So that's product pricing and factor pricing is discussed in the, we can say, microeconomics. And this is the important work of the price determination. That's why the other name of microeconomic is price theory, students. The other name of microeconomic is price theory, or even I can say it is also known as slicing method. माइक्रोइकोनॉमिक्स का दूसरा नाम जो होता है स्टूडेंट वो स्लाइसिंग मेथड भी कहलाता है स्टूडेंट्स. द अदर नेम ऑफ द माइक्रोइकोनॉमिक्स इज नोन एज द प्राइस थ्योरी और द वी कैन से स्लाइसिंग मेथड भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स. व्हाइल मैक्रोइकोनॉमिक्स मेनली स्टडी अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ and income determination. And the second one is income determination. See, income determination, here it is important. Income determination means we have to discuss at what level full employment is achieved. Whether the condition of the underemployment, full employment, or over full employment level, inflation, deflation, we have to discuss in this topic income determination, and this is the main work we have discussed in the class 12 syllabus. Income determination students. Income generally वहाँ determine होती है students where aggregate demand is equal to aggregate supply students. See, the main tools of analysis in macroeconomics are AD and AS, while the main tools of analysis in microeconomics are demand and supply students. Micro के अंदर area of concern mainly है, that is we can say allocation and price determination, while macro के अंदर area of concern है economic growth and income determination. तो ये macro का main work होता है income theory. So the other name of macroeconomic is theory of income, output and employment. Theory of income, output and employment, or we can say aggregative economics. It can also be said that aggregative economics or method of lumping. Method of lumping. It is also known as method of lumping students. See, if you purchase a bread or a cake, ठीक है, जो केक ऐसा होता है जिसमें डिवीजन नहीं होता है, पूरा बना हुआ होता है स्टूडेंट, उसको अगर अपन स्लाइस काटते हैं तो स्लाइसिंग मेथड इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज वी डील विद द इंडिविजुअल. और मैक्रो के अंदर अपन सबको जोड़ के पढ़ते हैं, तो ये लंपिंग मेथड. सिंपल एग्जांपल, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द ट्रीज एंड मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द फॉरेस्ट. ये एक एक ट्री के बारे में पढ़ेगा तो ये फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेगा. तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो इट मींस वी आर डिस्कसिंग एट द मैक्रो लेवल स्टूडेंट्स. So these are the, we can say, two main branches of the economics, microeconomics and macroeconomics. These two branches were divided by the Regner Frisk. That's we can say he belonged to the also university. He divided the working of the economics into two branches, micro and macro. Okay, the meaning of the microeconomics is, we can say, micro is derived from the Greek word micros, which means small. Therefore, it deals with the individual.
Individual can be a household, individual can be a firm, individual can be industry. While in macroeconomics, we discuss about we can say aggregates. The word macro is derived from the Greek word macros, which means large, and therefore it deals with the aggregates. Aggregate can be, we can say, okay, one more thing, is there is any example which proves there is study of aggregates in microeconomics? Market demand and market supply, large number of buyers and sellers. But students, there is a difference in aggregation. We know that there is also a study of aggregates in microeconomics, but there is a difference in aggregation, students. See, the microeconomics aggregation is related to particular firm or particular industry, but macroeconomics aggregation is related to the country, students. आप अगर एक मार्केट डिमांड पढ़ रहे हो तो इट्स वी कैन से रिलेटेड टू पर्टिकुलर फर्म्स डिमांड, स्टूडेंट्स, ठीक है, या कुछ पर्टिकुलर कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड आप पढ़ रहे हो. लेकिन अगर आप दैट वी कैन से एग्रीगेट डिमांड डिस्कस कर रहे हो तो इट इज वी कैन से एट द कंट्री लेवल, स्टूडेंट्स. So there is difference of the we can say aggregation. Both studies about the aggregates. ठीक है. Microeconomics also studies aggregate, but there is a difference in aggregation of microeconomics and macroeconomics. तो इसको कॉपी करो, मैं सर से मिलकर आता हूँ. सर वो बंद हो गया, चल ही नहीं रहा, स्क्रीन नहीं आ रही है. So this is the we can say main starting of the subject, students, of the economics. We have to discuss about the difference between micro and macro, students. So we are coming to the topic of economic problem. See, students, economics starts mainly with the scarcity. Scarcity means kami, students. We are all having the we can say limited resources and limited wants. Suppose you are having a piece of land and you want to use it, you have the one opinion, you want to use it for the agriculture purpose, you want to make a hospital, you want to make a school, you have the opinions, these are the opinions, or you have the choice, you want to make a mall, you want to make a factory. So these are the we can say options you can go on a particular piece of the land. Is all these things are possible? No, students. So these are all that is unlimited wants, and this land is a we can say is a resource. So we are having the we can say unlimited wants, and this particular land is a limited resource. We can't make all the we can say wants. All these wants cannot be satisfied. So we have to make a choice. कौन सी want मेरी ज़्यादा important है, students? So economic problem is the term which is related to the problem of a choice. It is a problem of a choice. It arises mainly due to first thing is unlimited wants. Second reason is limited resources, and the third is alternative uses. Friends, human wants are unlimited. No man can satisfy want fully. If one want is satisfied, the other will crop up. So we are always having the we can say unlimited wants, students. Unlimited wants होती हैं, लेकिन जो resources होती हैं
वो लिमिटेड होती हैं स्टूडेंट, जो मीन्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इवन टाइम इज अ रिसोर्स स्टूडेंट। एक स्टूडेंट अगर क्लास 10th पास करता है स्टूडेंट्स, तो ही हैव द चॉइस ऑफ द वी कैन से साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स। ही कांट ऑप्ट ऑल द थ्री स्टूडेंट्स, he has to make a choice student, so he has also the limited time. So there is always a problem of a choice students because of the we can say unlimited wants, limited resource. See, all wants can be satisfied, but at a particular time it's only one. So now you have to make a choice कि कौन सी want आपकी ज़्यादा important students. You have to give a priority students कि आपकी wants क्या हैं। सुन, आप चाहो तो CA का कोर्स कर सकते हो, CS का कोर्स कर सकते हो, BBA कर सकते हो, MBA के लिए भी वर्क कर सकते हो स्टूडेंट। तो यू आर हैविंग द वी कैन से अनलिमिटेड वांट्स स्टूडेंट्स, ऑप्शंस हैं आपके पास, बट द चॉइस जो अपन कहते हैं टाइम है वो लिमिटेड है। टाइम यहाँ पे अपने पास रिसोर्स है स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू चूज व्हाट ऑप्शन यू वांट स्टूडेंट्स। यू हैव टू गिव अ प्रायोरिटी स्टूडेंट्स, दैट्स द वी कैन से ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब अपने पास वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं स्टूडेंट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इफ वन वांट इज सेटिस्फाइड द अदर विल क्रॉप अप, बट द मीन्स जो होती हैं, जो रिसोर्सेज जो होती हैं स्टूडेंट, दैट्स आर ऑलवेज limited. I am using the word always, giving to the Tata, Birlas, Ambani, Adani, they are also having the we can say limited resources. Their own point of view, from our point of view, they are very rich. They are having all the things. That's true, student. But if they think from their own point of view, they are also having a limited resource. They have suppose 10 projects in mind. They can only go for the 2 or 3. They can't use put all the resource in a we can say all the projects. They have to we can say again go for the choice student. मतलब अपन कह सकते हैं कि हर किसी के पास जो रिसोर्सेज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। सी हैज द रिसोर्सेज बीन अनलिमिटेड, देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टूडेंट। अगर आपके पास खूब सारी रिसोर्स है तो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड एंड वी हैव टू मेक अ चॉइस। सी स्टूडेंट, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो आई विल गो फॉर द कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस कि मेरी कौन सी दैट इज वी कैन से जो वांट है जो जिसमें ज़्यादा मेरे को बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट। जैसे मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स मॉल बना लेना चाहिए स्टूडेंट्स, 3-4 चीज़ें तो मेरे साथ में आ जाएंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके अंदर आप कह सकते हो कि आप होटल भी बना सकते हो, उसके अंदर शॉप्स भी कर सकते हो, मल्टीप्लेक्स भी बना सकते हो। तो दैट इज द वी कैन से आज की तारीख में अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मैं तो मॉल खोलूंगा स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि दैट इज वी कैन से मुझे वेलफेयर करना है या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो गवर्नमेंट विल गो फॉर द वेलफेयर। कितने लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर हाउ यू वांट टू यूज द रिसोर्सेज। इफ द इकोनॉमी इज कैपलेस they will work for the profit motive. If economy is socialist, then they will go for the welfare motive. So business minds always go for the we can say profit motive. कि मेरे को कहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो मैं वहीं पे रिसोर्स को डाइवर्ट करूँगा, ठीक है। आप लोगों ने सीए फाउंडेशन का जो कोर्स ऑप्ट कर रखा है, इसके अंदर आपका है ओपिनियन ये चला हुआ कि यार मुझे 20 लाख की सैलरी मिलेगी पर एनम, तो दैट्स ट्रू स्टूडेंट्स। आप सीए बन जाओ, फर्स्ट क्लास प्लस बन जाओ, यू विल गेट द वी कैन से एटलीस्ट 25 to 30 lakhs पर एनम। दैट्स योर वी कैन से चॉइस, आपकी ओपिनियन है कि आप प्रॉफिट मोटिव पे बेस पे वर्क कर रहे हो या स्टडीज कर रहे हो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के सामने भी स्टूडेंट्स कई सारी प्रॉब्लम मतलब कह सकते हैं ऑप्शंस होते हैं। जैसे 11th के अंदर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, आपने कभी प्रिंसिपल को जाके बोला नहीं कि मैम हमें तीनों ही दे दो, सुबह 8 से 10 हमें साइंस पढ़ा दो, 10 से 12 हमें कॉमर्स पढ़ा दो और दैट इज 12 से 2 हमें आर्ट्स के 2-3 सब्जेक्ट भी पढ़ा दो। इट्स नॉट पॉसिबल स्टूडेंट, यू हैव टू गो फॉर द चॉइस बिकॉज टाइम इज ऑल्सो अ रिसोर्स। वी हैव टू मेक अ चॉइस कि कौन सी फैकल्टी अपन को ज़्यादा दैट इज वी कैन से सूट करती है अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो वी हैव टू गो फॉर द ऑल्टरनेटिव यूजेस कि सारी वांट्स पूरी हो सकती हैं। अगर आप देखो तो वो ज़मीन आप एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, हॉस्पिटल भी बना सकते हो, स्कूल भी बना सकते हो, मॉल भी बना सकते हो और फैक्ट्री भी बना सकते हो, लेकिन एट अ टाइम आपको चॉइस करनी ही पड़ेगी क्योंकि इतनी रिसोर्स नहीं है कि सारी की सारी वांट्स मेरी सेटिस्फाइड हो जाए स्टूडेंट्स। ऑल वांट्स आर सेटिएबल स्टूडेंट्स, but at a particular point I have to go for a choice student. I can't use the particular resource in all the uses. I have to make the economic problem. Coming back to the topic, problem of a choice, it arises due to we can say unlimited wants, limited resources and alternative uses. Now students, ये जो concept है scarcity का, this was given by the we can say Lionel Robbins.
in the year 1931 in his book Nature and Significance of Economics. मतलब इकोनॉमिक्स का जो मेन रोल है वो 1931 से स्टार्ट हुआ है स्कैसिटी। ये इकोनॉमिक्स के अंदर अपन को पढ़नी चाहिए स्कैसिटी, तो ये स्कैसिटी तो है स्टूडेंट, अगर आपके पास खूब सारी रिसोर्स हो तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं स्टूडेंट। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? स्कैसिटी से शुरुआत हुई, बिकॉज वी आर हैविंग अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड दैट हैज टू बी पुट इन ऑल्टरनेटिव यूजेस। आई कैन आस्क व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? अनलिमिटेड वांट्स, ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन लिमिटेड रिसोर्सेज, थर्ड ऑप्शन ऑल्टरनेटिव यूजेस, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो आई हैव टू पुट ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो होते हैं कारण होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, can scarcity and choice go together? Can scarcity and choice go together? Yes students, both will go together because of same thing, unlimited wants, limited resource and alternative. See, what has asked, can scarcity and choice go together? Scarcity है तभी तो कमी होगी, मतलब चॉइस करनी पड़ेगी। अगर आपके स्कैसिटी नहीं है तो चॉइस करने की जरूरत ही नहीं है, तो बोथ विल गो बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ध्यान रखना स्कैसिटी एंड चॉइस दोनों साथ साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं? बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। स्टूडेंट्स एनी डाउट स्टूडेंट्स? शुड वी मूव फर्दर स्टूडेंट्स? कॉपी करना तो कर लो, सुन आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। Students, now coming to the topic of central problems. Students, central problems are also known as the basic problems, whether the economy is capitalist, socialist or mixed. Every economy faces a central problem, that is what to produce, how to produce and for whom to produce, and the fourth one is what provisions are to be made for the future generation. Now students, these central problems arises of the same reason, because of unlimited wants, limited resources and alternative uses. If I say why do central problem arises, so it's the same thing, that is we can say it arises because of unlimited wants, limited resources and alternative uses. The first such central problem is what to produce. See, we have discussed we are having the limited resources. So now this problem is related to the choice of which goods and services are to be produced. We are having the limited resources. Now we have to choose whether the resources are to be used for the production of, say, example, consumer goods,
or producer goods. There is a choice. I can't say like that कि there is a choice, we can divert all the resource in consumer goods or producer goods, but we can taking the option कि whether the resources can be used for the consumer goods or for the producer goods. It decides, decision depends upon the country level. This is the topic of microeconomics, but we are discussing central problems. पूरी country level पे अपने पास जो resource है वो देखनी है कि कहाँ डाइवर्ट करनी है स्टूडेंट्स, कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स में. स्टूडेंट्स 12th क्लास के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा अबाउट प्लानिंग. इंडिया के अंदर फर्स्ट प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 के अंदर एंड एंड 56. इन दैट फर्स्ट प्लान वी हैव गिवन प्रायोरिटी टू द एग्रीकल्चर. दैट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन द कंज्यूमर गुड्स. इन द सेकेंड 5-year प्लान वी हैव फोकस टू द इंडस्ट्रीज. तो दैट्स डिपेंड अपॉन द प्रायोरिटी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, रिसोर्स कहाँ डाइवर्ट करनी है. फर्स्ट प्लान के अंदर प्रायोरिटी थी कि अपने पास खाने के लिए भी नहीं था, तो वी हैव डाइवर्टेड द रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स. सेकंड प्लान के अंदर फोकस आ गया कि नहीं यार, वी शुड आल्सो डाइवर्ट रिसोर्सेज इन प्रोड्यूसर गुड्स, मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. सो दैट्स अकॉर्डिंग टू वी कैन से प्रायोरिटी, वी हैव टू गो फॉर द प्रायोरिटी कि कौन सी वांट अपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So what to produce is the problem related to the choice of which goods and services are to be produced, that is whether consumer goods or producer goods. Suppose if economy decides for the production of the consumer goods, it has again option of necessities or luxuries. Necessities can be wheat, rice, milk, etc. Comforts and luxuries like car, TV, air conditioners, etc. On the contrary, if economy decides for the production of the producer goods, it can produce machines, tools, equipments, factories, etc. So that also depends upon the ability of the economy. Still we can't produce the producer goods machines, we have to import it. So we have this also depends on the ability of the economy. We can divert the resource in the production of the machines, tools and equipment, but should we have the ability, we have to discuss also. So what to produce is a problem related to choice of which goods and services are to be produced. That is whether we have to divert the consumer goods, we have to produce consumer goods or producer goods. If economy decides for the consumer goods, we have the option, producer goods, we have the option. But it's not like that 100% of the resource is diverted for the production of the consumer goods or producer goods. We can also divide a part of resource in consumer goods and a part of resource in a producer goods. Besides that, there is one more thing we have to go for it. A part of resource in defense equipments. That is arms and ammunition, because we are having a very good friendly neighboring countries like Pakistan, like China. They are very friendly to us because they don't we can attack directly, they attack indirectly. So we have to divert a part of resource for the defense equipment also, students, so that if any we can say case of the threat, we should be able to check that threat as well. अगर ये डिफेंस पे अपन पैसा खर्च नहीं करें ना स्टूडेंट्स, तो डायरेक्टली अटैक कर देंगे स्टूडेंट्स. So we have to divert a part of resource in a defense equipment. इंडिया का जो बजट है, that is we can say defense पे, around that is we can say 20% है स्टूडेंट्स. इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इंडिया के पास बॉर्डर जो है बहुत बड़ा एरिया है बॉर्डर का, चाइना से और पाकिस्तान से, खास फ्रेंडली कंट्रीज है अपनी स्टूडेंट्स. तो उनको that is we can say चेक करने के लिए we have to divert a part of resource in the defense equipment, that is beside consumer goods and producer goods students. So this is the first central problem that every economy faces, whether the economy is capitalist, socialist and mixed. See, in capitalism we have discussed there is a role of private sector that work for the profit. Central problems are solved by the price mechanism. तो students, अब जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यूएस एंड यूके, वो व्हाट टू प्रोड्यूस जो है वो सॉल्व करती है प्राइस मैकेनिज्म से. प्राइस मैकेनिज्म इज दैट पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल. इट मीन्स जो चीज़ डिमांड होगी उसी चीज़ का प्रोडक्शन होगा. दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज अ प्राइस मैकेनिज्म. आई कैन आस्क हाउ सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन अ कैपिटलिज्म. सो वी हैव टू गिव द प्राइस मैकेनिज्म. लेकिन इसमें जहाँ सोशलिज्म, गवर्नमेंट का रोल होता है, गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर, गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर, गवर्नमेंट
नॉट वर्क फॉर द प्रॉफिट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट, अगर अपन मैं कहूँ कि व्हाट टू प्रोड्यूस अपन को डिसाइड करना है, तो गवर्नमेंट देखेगी कितने लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा है। जहाँ वेलफेयर ज़्यादा होगा रिसोर्स वहीं डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इतनी जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट दैट इज कहते पानी दे रही है स्टूडेंट आपको सुबह शाम, उसका पानी का बिल हार्डली 100 रुपीज़ आता है स्टूडेंट। तो वो गवर्नमेंट के लिए वेलफेयर है स्टूडेंट, लेकिन उस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है स्टूडेंट। तो गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री स्टूडेंट। तो ये जो है आपको देखना है कि इकोनॉमी वेदर इज अ कैपिटलिस्ट और अ सोशलिस्ट। कैपिटलिज्म के अंदर दैट इज कैन से प्राइस मैकेनिज्म वर्क करेगा, सोशलिज्म के अंदर सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। लाइक इन इंडिया इट वाज प्लानिंग कमीशन, नाउ इट इज नीति आयोग। 2015 के अंदर आया था नीति आयोग। The full form of NITI is National Institute for Transforming India students. So this is the first problem. What to produce? We are having the limited resource and we have to opt whether these resources are to be used for the consumer goods or for producer goods. So the second problem is how to produce. Students, how to produce is again a problem of choice related to methods of production. So there are the two methods of production, that is labor intensive and capital intensive. See students, this how to produce, we know that production is done by the producer. Production is done by the producer. So producer always chooses that combination of labor and capital that gives the maximum output using minimum input. Since input means what we have to employ on the factors of production. प्रोड्यूसर एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करेगा लेबर और कैपिटल का जहां आउटपुट तो मैक्सिमम हो बट इनपुट मिनिमम हो, बिकॉज एट दैट पॉइंट ही विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट. देयर इज नो सच प्रोडक्शन एक्टिविटी विच इज 100% labor intensive or 100% capital intensive. So we have to make a combination of the two. कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें मेरे को प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि मैं वो वाला कॉम्बिनेशन चूज करूंगा आउटपुट तो मैक्सिमम आए इनपुट मिनिमम आए. ये एक्चुअली इस बार अपने सिलेबस में है, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म. डोंट रिकॉल द 11th क्लास, वो अलग था. एक अपने टॉपिक पढ़ा था इंडिफरेंस का. In the same way we have to discuss the iso-quant curve. Producer equilibrium वहाँ पर आता है where iso product is tangent to the iso cost line. We have to discuss that topic also in this syllabus. उस पॉइंट पे अपन को ये पता चलता है कि कौन से that is again the combination पे maximum output मिलेगा. तो प्रोड्यूसर हमेशा इस तरह से कॉम्बिनेशन सेट करेगा लेबर और कैपिटल का जहाँ आउटपुट तो मैक्सिमम हो लेकिन इनपुट मिनिमम हो. लाइक इंडिया के अंदर जो है स्टूडेंट्स लेबर सरप्लस इकोनॉमी, लेबर बहुत चीपली अवेलेबल है स्टूडेंट्स, मतलब सस्ता है लेबर बहुत ज़्यादा. मतलब आपने नोट करा होगा कि इंडिया के अंदर आईटी जो है सबसे जो है इंडिया को मिला. इंडिया के अंदर चीप एंड स्किल्ड लेबर अवेलेबल है. एमएनसीज वगैरह इंडिया के अंदर सर्विसेज हायर करनी आती हैं स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ दैट ऑफ द कॉल सेंटर दैट इज कैन से बीपीओ. तो वो क्यों आती है? क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर चीपली अवेलेबल है. तो जहाँ लेबर ज़्यादा होगा वहाँ पर लेबर का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा और मशीनों का यूटिलाइजेशन कम होगा. लाइक लेबर सरप्लस इकोनॉमी गो फॉर द लेबर इंटेंसिव. इट मीन्स 3/4 मेरे को लेबर लेना है और 1/4 मेरे को मशीनरी लेनी है. इस प्रोपोर्शन पे उस पर मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. बट स्टूडेंट्स अमेरिका वगैरह के अंदर जाओ तो वो कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है, वहाँ लेबर बहुत शॉर्ट है स्टूडेंट्स. तो वहाँ पे लेबर महंगा भी है तो सही लेबर, लेकिन लेबर वहाँ पे महंगा है. तो कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी लाइक अमेरिका should go for the capital intensive. वहाँ पे 3/4 वर्क मशीनें करती हैं, 1/4 वर्क वहाँ पे इंजीनियर्स करते हैं. So in capital surplus economy, the country should go for the that is we can say capital intensive method of technology students, because that will give that economy a maximum profit. इंडिया जो है लेबर सरप्लस है, तो इंडिया के अंदर अपन को लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करना चाहिए बिकॉज इंडिया के अंदर लेबर सस्ता है स्टूडेंट्स. इंडिया के अंदर लेबर का यूटिलाइजेशन ज़्यादा और जहाँ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है वहाँ कैपिटल का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए स्टूडेंट्स. लाइक जैसे अपन इंडिया को देखें तो इंडिया के अंदर अपन को प्रोपोर्शन लेबर का लेना चाहिए और कैपिटल का स्टूडेंट्स 1/4 लेना चाहिए स्टूडेंट्स. कैपिटल को हालांकि अपन के से रेफर करेंगे स्टूडेंट्स.
कैपिटल को अपन के से रेफर करेंगे। वाइल यूएस के अंदर अपन देखें तो 3/4 जो है स्टूडेंट्स कैपिटल होना चाहिए स्टूडेंट्स, एंड लेबर जो होना चाहिए स्टूडेंट्स 1/4 प्रोपोर्शन होना चाहिए, क्योंकि उस पर वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, इंडिया के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यूड विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। सॉरी स्टूडेंट्स, क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।